when I was told that I have to kiss Flora, I think my reaction was कि यार लड़कियों किस करने से like a sisterly thing, you know. क्या फ़र्क पड़ता है, I was convincing myself one way or the other. And मुझे लगा यार लड़का अगर होता तो शायद मैं ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होती है ना, बिकॉज कोई रैंडम इंसान से किस करना पड़े. लड़की तो बहन जैसी है. आई होप शी इज़ नाइस, उसकी एनर्जी, उसकी वाइब अच्छी हो. बाकी एंड देन when I saw her and I'm like, wow, she's beautiful, yeah. I don't mind kissing her. So that's how it went, and I'm like, okay. And then her convincing and she convinced me, and then the director sir convinced me कि you know what Anveshi, it's gonna be okay. ये बहुत हो रहा है, ये होता है, it's normal, it's okay, it's not real. I said, am I supposed to do this really, or it's a fake thing? But you just be in the moment. I said okay. So it was so much going on in my head. I was only praying and hoping कि किसी को पता ना चले. मेरे जानने वाले जितने लोग हैं बस कहीं ना कहीं से एक फिल्टर उनके लिए आ जाए, उनको ना पता चले, and that's it. But ऐसे कैसे होने वाला था. So I think बहुत बदनाम हुई मैं इनिशियली. तो मेरे जो स्कूल कॉलेज और छोटे शहर में जो बातें चली होंगी, आई कैन ओनली इमेजिन उन्होंने क्या क्या बोला होगा. उनको अभी भी लगता है कि कोई शॉर्टकट होगा या इस तरीके की चीज़ें हम असल ज़िंदगी में भी करते हैं टू गेट फेमस. बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली. इट्स वेरी जजमेंटल एक्चुअली, वेरी जजमेंटल ओपिनियंस. बट इवेंचुअली टर्न आउट टू बी गुड. ज़िंदगी के तजुर्बे ने ये सिखाया ज़रूर है कि कोई भी चीज़ बहुत टेम्परेरी होती है. लोग कुछ दिन तक आपको बोलेंगे, फिर भूल जाएंगे. ना कोई जाने, ना आपके बारे में कोई बात करे, अच्छी बुरी या कैसी भी, वो ज़्यादा बुरा होता है जब आप दिखते ही नहीं हो. आप कोशिश कर रहे हो इतनी ज़्यादा लाइक्स और अटेंशन पाने की, आप कपड़े उतार रहे हो ऑन स्क्रीन, आप इंस्टाग्राम पे एब्सोल्यूट बिकनी फोटोज़ डाल रहे हो, लेकिन आप यू आर सीकिंग दैट काइंड ऑफ अटेंशन. हियर I wear a sari and I get much more attention than anybody else. So I think blessing इतनी ज़्यादा है ना कि मुझे वैसी कोई भी चीज़ नहीं करनी पड़ रही है at the moment कि जहाँ पे मुझे लगे कि मुझे extravagantly अपने आप को show off करने की ज़रूरत है to get the love from the audience. तो ऐसे में वही जो छोटा सा जो part होता है ना criticism का, वो matter ही नहीं करता. Blessing बहुत है. I will be the best in the country and I'll really do a good job. But fact of the matter is that it has to be worthy of doing and worthy of being a part of. Which when I say that, I mean it has to have that kind of first of all the directors, the team, the channel, the production house, everything will matter. And erotica के साथ में जो चीज़ सबसे ज़्यादा important है वो ये है कि आपकी chemistry कैसी है आपकी co-star के साथ में, और story line क्या है. It cannot be just the scene and उसके आसपास में आपने थोड़ी बहुत कहानी लगा दी, like how you see Hollywood films, brilliant scenes but brilliant screenplay and story as well. What we are going after now is flesh and body and sex. Life is not just about that. लोगों को लगता है कि अगर आपको एक hot girlfriend मिल गई या अगर आप खुद एक hot लड़की हैं तो आपकी ज़िंदगी आसान है या आपके लिए बहुत easy हो जाता है struggle. जबकि इनफैक्ट बहुत सारी लड़कियों, बहुत सारे लोग जो मेरे फ्रेंड्स हैं या इंडस्ट्री के लोग हैं, वो बोलते हैं कि yesterday a girl called me and she asked me कि I want to become like Anveshi Jain, तो उसके लिए I need some money to get some surgeries done. मैंने कहा where are these people coming from? ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है यार. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ नेचुरल. सेकेंड ऑफ ऑल अगर इन केस आप मान लो कि किसी की बॉडी फेक है भी, but then what do you think what is gonna get to you? I mean, I don't really understand. It has to start with your mind, your mindset, your intelligence, your way of talking. Everything matters, isn't it? It's a whole personality. It cannot be just the body, right? So वो एक गलत डायरेक्शन में नच तो डेफिनेटली हम हो रहे हैं. My mantra, I would rather say, is to have a purpose in life. Purpose का होना बहुत ज़रूरी है हर किसी की ज़िंदगी में. वो कुछ भी हो सकता है. And when I say purpose, I mean I want to inspire people in some way or the other. Right now I'm young and I'm pretty and I have this hot, nice body, so people are enjoying looking at me and all of that, and I'm enjoying flaunting it because I understand that this is the need of the hour. But if you have noticed, even when I'm displaying myself on social media, I'm always talking about something that is somewhere important for a lot of youngsters to listen. Like yesterday's live was about don't waste time. Someday I will talk about take care of your parents. Things like these. I keep talking about things that really, really matter despite dressing sexy. Even my app, people think it's only about the sexy stuff, but it is majorly about connecting to people, taking care of them, talking to them,
discussing their real life problems, discussing their relationship, because ऐसे में ना एक real bonding होती है, and bonding is what heals people. So the idea, my purpose and my life mantra is to actually make a difference in someone's life, however it is. I always wanted to date Shah Rukh Khan actually for a very long time. I think that's one fantasy that I have, but let's see if that can ever happen. I am a sapiosexual, which means I need a man who can actually talk intellectually, especially somebody who is stimulating in conversations more than anything, and I think there are very few like that. Shah Rukh Khan being one. Anybody younger? Let me think. Siddharth Malhotra is hot for sure, but going on a vacation would be a big deal. I'm not sure. I think I don't mind Ranveer Singh actually. He's fun. He looks fun. Where will I go? I think Las Vegas is gonna be a place for me. Yeah, I love lights. I love city. I love noise. I love all of that. So Las Vegas is the place.